अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो कैप्लर्स फर्स्ट लॉ है दैट ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन एलिप्स विद द सन एट वन फोकस। इसको अब हम प्रूफ करते हैं। लेट्स से हमारे पास जो मास ऑफ सन है, मास ऑफ सन इज m and mass of planet is small m. So by the Newton's law of gravitation, they attract each other with the force g. G is the gravitational constant here. So m into n over r square. So we know that my past जो differential equation of the orbit थी, we have that one is mh square u square d square u over d theta square plus u is equal to force, और force हमारे पास यहाँ पर g m into m over r square. We can cancel out this m, small m, on both sides. So this will become d square u over d theta square plus u is equal to g into capital M over r square, और h square u square को हम इस तरफ डिवाइड कर देते हैं। नाउ हम जी एम हमारे पास दोनों कांस्टेंट हैं, सो हम इसका एक न्यू कांस्टेंट म्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, और आर हम आर को लिखते हैं 1 ओवर यू। सो 1 ओवर आर हमारे पास हो जाएगा यू, और इसी तरह 1 ओवर आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट करें और हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर plus u is equal to gm u square divided by h square u square. ये u square इस u square से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये gm हमने कहा था कि इसको हम u पुट कर लेते हैं। So we can write this as d square u over d theta square plus u is equal to mu over h square. नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी, दिस विल बी डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस यू ओवर ए स्क्वायर। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चूँकि हम इसको प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बना लें। सो वी कैन टेक दिस एज, चूँकि हमारे पास यू ओवर स्क्वायर कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट दिस एज यू ओवर स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इट विल बिकम 0, तो इस u को u माइनस एच स्क्वायर लिख सकते हैं in that derivative plus u minus mu, this is mu over h square, this is equal to 0. Now this हम इस पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम इसको d square plus 1 लिख सकते हैं और u माइनस mu over h square को कॉमन ले सकते हैं। So, अब हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा, दिस इज u माइनस म्यू ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू c cos ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। सो हम इसको इक्वेशन नंबर b कह लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर b इज द इक्वेशन ऑफ द मोस्ट जनरल ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर सेंट्रल फोर्स वेरिंग एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। Now constant theta naught can be made 0 here by rotating the baseline. Theta is equal to 0. इक्वेशन जो b है हमारे पास ये बन जाएगी h square is equal to c cos of theta, because theta naught हम 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, theta naught. So this equation can be now written as u is equal to mu over h square plus c cos of theta. u हमने पुट किया था 1 over r, we can again put that 1 over r. This is mu over h square plus c cos of theta. इसको हम ऐसे दोबारा से लिख सकते हैं। now यहाँ से हम mu over h square कॉमन ले लेंगे, तो this equation will become mu over h square 1 plus c over mu over h square cos of theta.
बोथ साइड्स को हम एच स्क्वायर ओवर म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर ओवर म्यू डिवाइड बाय आर। यहाँ पर जब हम एच स्क्वायर ओवर म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 1, सो दिस इज 1 प्लस सी ओवर म्यू ओवर एच स्क्वायर cos of theta. Now हमारे पास पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक है which is L over R into 1 plus E cos of theta. So अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, so here we have L is equal to h square over mu and E is equal to C over mu over h square, which can be done as h square over mu into C. So हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम है दिस इज एच स्क्वायर ओवर म्यू एंड इसेंट्रिसिटी हमारे पास है एच स्क्वायर सी ओवर म्यू. So this completes the proof that the orbit is a conic with one focus at center of the force and semi-radius rectum equal to h square over mu and eccentricity at h square c over mu. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैप्टर सेकंड लॉ पढ़ते हैं. It states that the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal time. In other words, we can say that a planet sweeps out equal areas in equal time, which means that area divided by time called the areal velocity is constant. So the time it takes a planet to move from position A to position B, sweeping out the area A1, is exactly the same as it moves from point C to point D and sweeps the area A2. And also to move from E to F and sweeping out the area E3. So these all areas are same. So this is the Kepler second law. Let the planet moving under the central force due to the sun have polar coordinates r theta. Let P and Q be the neighboring position of the planet and let sun be at region O. So let sun be at region O. So using the radial and transverse direction, we can write this versus radial component. This will be minus r because it is directed toward the center, and this is transverse component. So we can write this as forces ma below that. So radial component plus transverse component. Now we know that हमारे पास जो radial component है this is equal to radial component of acceleration is double derivative of r minus r single derivative of theta squared, and a theta is equal to, this is the transverse component 1 over r d by dt r square theta dot, that is the first derivative of theta. These are the radial and transverse component of acceleration. Now since f is a central force, so its transverse component is 0. That means कि हमारे पास f of theta is equal to 0 आ जाएगा, which implies that कि हमारे पास m a theta is equal to 0 हो जाएगा, which implies that acceleration transverse component of acceleration है वो 0 हो जाएगा, which means 1 over r d by dt r square theta dot will be equal to 0. So which implies that d by dt r square theta dot is equal to 0. And this implies that अगर हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करें, so this will become theta dot is equal to any constant which we say will be h. This h is the constant of integration. Then this area, which is this one, is equal to area of OPQ. So that was a triangle, which you can write this as OQ into PR. So हमारे पास OQ क्या है, यहाँ से फिगर्स देख लेते हैं. This OQ is R plus DR, R plus change in R, and then this PR is R sine of change in theta. So we can write this as 1 over 2
2 r squared sine of del theta plus 1 over 2 r del r sine of del theta. This is del of a. So we can write this as 1 over 2 r squared sine del theta over del t plus r del r over del t sine del theta. Now take the limit as delta t approaches to 0 and delta r approaches to 0 and delta theta approaches to 0. We get dA by dt. Now this will become the exact differential, so this we can write as dA by dt 1 over 2 r squared theta dot, that is the derivative of theta, plus r, or del r into 0 choice, you can write this as 0 and theta dot. So we are left with 1 over 2 r squared theta dot. So dA by dt can be written as 1 over 2 r squared theta dot. So in this case these both are constant, so we can write this as an h. This shows that the aerial velocity is constant and the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas and times. This completes the proof. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस वीडियो में हम केप्लर्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ते हैं. Kepler's third law describes how a planet's orbital period is related to its average distance from the sun. Now the ratio of the squares of the period to the cube of their average distance from the sun is same for every one of the planet. Now we can say that the aerial speed which we have derived earlier is dA by dt is equal to 1 over 2 r squared theta dot. इसको हमने लिखा था 1 over 2 h. So this is area described in unit time is h by 2. So if it is in unit time is h by 2, so in time t it will be th by 2. That is area described in t time is equal to th by 2. Now th by 2 is equal to area, and area is pi ab in that case of the ellipse. So t is equal to 2 pi ab over h. So we can write this as, अभी हमने last time पढ़ा कि this is जो latest spectrum है which is L, this is h square over mu. So h square is equal to mu L, और इसी तरह h हमारे पास हो जाएगा mu L square root. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. This will become t is equal to 2 pi ab over L mu. So we can write this as 2 pi ab, और square roots हम सेपरेट कर लेते हैं like this. Now which can be written as 2 pi ab. So latest vector यहाँ पर क्या होगा? This is b square over a. Semi minor axis is b and semi major axis is a. So L is equal to b square over a. So square root L is b over square root a. So this can be written as b over square root a into square root mu. Now this b is cancelled with this a, equal to 2 pi a 3 by 2 over mu square root. This is equal to t, and if we take the square, then it will be 4 pi square a cube over mu. This shows that the squares of the period of the planet
are proportional to the cubes of the semi. You can write this as t square proportional to a cube, because these terms are all the constant. So this t square is proportional to the a cube, which shows that the squares of the period of the planets are proportional to the cubes of the semi major axis of their orbits. Thank you very much.